हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आप लोग सब सही सलामत हो। चलो अकाउंटिंग को लेकर थोड़ा सा अड्डा हो जाए। सो फ्रेंड, हम लोग को इतना दिन हम क्या किए, मेरा पहला जो वीडियो था ना 34 वीडियोज़ वाज इन द फर्स्ट फेज। वी हैड 34 वीडियोज़ ऑन अकाउंटिंग. All those have been uploaded previously. Right now in the phase 2, we have coined in this way ACS2, and in this section we are taking up the topics on partnership accounting. The first topic on three classes, 3 videos were uploaded on the concept of partnership deed and like all this. But after that, from the 4th class, we have started discussing profit and loss appropriation account, and this is basically the first topic for the purpose of any commerce examination, and it is on partnership accounting. The initial topic, the first topic is profit and loss appropriation account, what it is, how it is, all these have been discussed in detail. है कि नहीं? आप लोग पढ़े हुए हैं, आप समझे क्या? मेरे ख्याल से आप जरूर समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो हमको जस्ट यू में टेक्स्ट में, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर में ये कर दीजिएगा, मैसेज भेज दीजिएगा, और यू मे कॉल मी टू जस्ट टू गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व. ओके, सो फ्रेंड्स, प्लीज बी ट्यून्ड विद अस, एंड द टॉपिक टुडे इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट. This type of topic was taken up yesterday too, in the previous class, that is class number 219. It was taken, and it has and today I am taking up that type of topic, a difficult one, a critical one, and this problem I am taking up to discuss the topic with the help of a problem, and that problem was given in CA inter examination. So friends, our target is to online teaching, coaching on accounting for all the students, for ICSE, for CBSE, for West Bengal Board, for CA, for ICWA, and for management studies. Okay, so here I have taken up one problem that was set in the examination CA inter. Okay, now friend, I have told you just the problem is a bigger one. I would like not to, देखो मेरे ख्याल से इतना टाइम वेस्ट करना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो उतना टाइम पे आप लोग का कंसल्टेशन भी नहीं रहते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किए, आई वुड लाइक नॉट टू रीड आउट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम विल बी गिवन इन द वीडियो. ओके, विल बी अपलोडेड. बट राइट नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड यू, फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ऑन अकाउंटिंग, यू शुड ऑलवेज prepare a synoptic note, and the note has already been prepared. Okay, just see, our accounting year is 2012, that is 1/1/2014 to 31/12/2014. So it is 2014 is our year in question. Our partners are Mr. A, B and C. Their profit sharing ratio is 2:1:1, and opening capital of ABC 75,000, 40,000 and 30,000. Opening current account 10,000, 5,000 and 5,000 debit balance. Interest on overdraft, interest on OD for 2014 as recorded so far 500, 190 and 350. The drawings made by them 15, 10 and 10 respectively. Now there are specific information which needs, there are some specific information which needs some adjustment. Life insurance premium of A rupees 1,000. Okay, 1,000 on 1/10/14 has been charged to miscellaneous expenditure account of miscellaneous expenses, has been charged as a miscellaneous expenses. Okay, and it has been debited to profit and loss account. Clear? So there is some problem. This problem is to be taken with due care. Okay, now I am discussing what the man has done. Just you see, the firm has done life insurance premium of a partner. Is it the expenditure of the firm? The insurance premium of general insurance premium is an expenses of the firm. But LIP, life insurance premium of any partner, is a personal expense. Okay,
and any personal expense of any partner made by the firm should be treated as drawing. Okay, drawing. So this is life insurance premium of rupees 1000 that has been given by the firm for Mr. A is not a business expenses, but this amount has already been treated to profit and loss account. Next part, repairs to plant. Repairs to plant, it is a revenue expenditure. Okay, but what the firm has done, they have charged it to plant account. Plant account has been debited, okay, to repairs. I would come in the next page in detail. Then traveling expenses. Traveling expenses of Mr. B for personal trip in UK on 30th 6 2014 has been charged to prepare profit and loss account. Clear? The next IOC 5% per annum, IOD, that is interest on overdraft, 4% per annum, and net profit as shown is 16,000. Clear? So friends, this is the total thing. Clear? And they have you have been asked to prepare profit and loss appropriation account. How to prepare, you know. I am only discussing the problem in our video, but all the solutions will be given in the video. Okay, just I am discussing the whole problem. Just you see what has happened. Net profit 60,000. Had it been the plain net profit, हम लोगों को तो कोई problem नहीं है. Net profit would have been distributed in the ratio of 2:1:1. ठीक है, 60,000 will be divided 30,000, 15,000 and 15,000. But दोस्त प्रॉब्लम बहुत हो गया. ए प्रॉब्लम हो गया बोल के हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर डिफरेंट एक्सपेंसेस व्हिच आर ऑफ डिफरेंट नेचर, नॉट द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन स्टार्ट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ आप लोग देखो क्या क्या हुआ है, एक एक करके हम ले रहे हैं. Just net profit as shown, I am making the calculation, you just consider it properly. Net profit as shown, rupees 60,000. But this is not the exactly the real profit, net profit of the firm. What has happened? Just you see, life insurance premium of A has been charged to miscellaneous expenses. देखो, I am making the full journal entry. Miscellaneous expenses account debit to bank or cash, whatever it may be. So it is 1,000. What do we do? This miscellaneous expenditure, when it is the expenses of the organization, then what do? We make it profit and loss account debit to miscellaneous expenses. Friends, आप लोग को लिए मेरा I am only discussing the whole issue. Solution आपको हाथ पे, हर solution the material thing will be given in the video. Now this has been done. As a result, what has been affected? The profit and loss account has been reduced by 1,000. Clear? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट आपको 1000 घट गया है, लेकिन ये आप लोग गलत किए हैं. इट शुड नॉट बी. द मिसलेनियस एक्सपेंसेस शुड बी रिटन ऑफ अगेंस्ट द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर. सो मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट एंड ड्राइंग ऑफ मिस्टर ए शुड बी डेबिट. ओके, तो व्हाट विल यू डू फ्रेंड? मिस्टर ए का ड्राइंग कितना हुआ है? 15,000 हुआ है. इसको साथ और क्या होगा, और 1000 ड्राइंग उसको और बढ़ जाएगा. ठीक है. सो द ड्राइंग अमाउंट विल बी एनहांस्ड बाय रुपीज 1000. ओके, क्लियर? नाउ व्हेन द क्वेश्चन ऑफ IOD is there, IOD I will come to the later on.
then this amount should be taken into consideration for the purpose of finding out the interest on OD. एक एक करके हम क्लियर कर दे रहे हैं और आप लोगों का सॉल्यूशन आपको साथ दिया जाएगा. सो आई हैव क्लियर्ड इट. ओके, तो ड्राइंग अकाउंट ऑफ मिस्टर ए should be 15,000 and there will be another drawing of rupees 1,000. So what will be the total? देखो, as a result what has been, we have rectified it. So it should be drawing account debit to miscellaneous expenses. But since आप लोग देखो, since it profit and loss account has been debited, we have to credit the profit and loss account. So it should be profit and loss account credit and drawing account debit. Clear? Because by passing the necessary journal entries, what you have done, it was debited and it was credited. So there is no miscellaneous expenditure account in your business accounts. So what is the account? The profit and loss account has been debited. So profit and loss account should be credited and drawing account should be debited. So the drawing of Mr. A will be enhanced by rupees 1,000 and the profit will be how much? The profit, that is this amount of profit, this will be added. So now we should add, ठीक है, life insurance premium of A. How much? It should be added to the profit. Are you getting me? मेरे ख्याल से समझे आप लोग? हाँ, अच्छा, आप देखिए नेक्स्ट क्या हुआ. हम देखिए मैं एकदम रूट में जाकर आपको समझा रहा हूँ. हर चीज़ इसी तरीक़े से कीजिएगा. जर्नल एंट्रीज एट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये आप लोग समझे अच्छी तरह से करते रहेंगे तो ज़िंदगी में अकाउंट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वही फॉलो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. गलती तुमको पकड़ जाएगा और जर्नल एंट्री ठीक होगा तो गलती तुम्हारा एकदम कोई नहीं होगा, तो योर सोल्यूशन सही होगा. अच्छा, नाउ नेक्स्ट, सो for LIP the profit and loss account was reduced, now it has been enhanced. Now next, repairs to plant. What is the original entry? Repairs to plant, basically what the entry? Repairs account debit to bank. So it is how much? 10,000. So it was the original. Now this repair should be written off against profit and loss account. Okay, profit and loss account debit to repairs. Clear? Understood? Oh sorry, it should be repairs account debit to, yes, profit and loss account debit to repairs. It should be the original journal entry. So it is the transaction at the time of, this is the entry at the time of transaction, and this is the entry at the closing of the year. So it is known as closing account. ये होना चाहिए, लेकिन आप लोग क्या किए, ये नहीं करके आप लोग क्या किए, एसेट को ये कर दिए, डेबिट कर दिए, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, टू रिपेयर्स टू प्लांट. देखो ये तो रिपेयर्स डेबिट हुआ था, रिपेयर्स क्रेडिट हुआ था, ये तो हो गया, ठीक है. तो लेकिन हुआ क्या, एसेट घट गया. ओके सॉरी, एसेट को हम बढ़ा दिए, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिपेयर. राइट, आर यू गेटिंग मी? तो क्या हुआ था, इधर क्या लिखा, रिपेयर्स टू प्लांट चार्ज टू, हो सॉरी गलत बोले हम, ये लिखे देखो, रिपेयर्स टू प्लांट चार्ज टू प्लांट अकाउंट. तो हम लोग क्या किए, इसको होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, लेकिन हम लोग किए हैं क्या, एसेट अकाउंट डेबिट टू, हाँ ठीक ही तो है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिपेयर. ये होना चाहिए, लेकिन हम लोग किए क्या, इसको किए हैं. अंडरस्टूड? इसके चलते क्या हुआ, एसेट अकाउंट तुम्हारा बढ़ गया. कितना अमाउंट से, 10,000 एसेट हैज बीन एनहांस्ड. ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सोचिए. इट्स एज ए रिजल्ट हमको अभी क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को डेबिट करके
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट। क्लियर? हम लोग क्या किए थे? रिपेयर्स टू प्लांट चार्ज टू प्लांट अकाउंट, तो प्लांट एसेट वाज एनहांस्ड and repairs asset was decreased and profit and loss account was debited. But what we should do right now, our repairs account debit to asset. Now repairs, it has been asset account debit to repair, we have done. ठीक है? Now repair has been reduced, no problem. Now the asset account should be credited and profit and loss account should be debited. So this is our basic correction. Clear? So our correction is what? Assets का value हमारा घटेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी घट जाएगा। क्लियर? तो इट शुड बी एसेट अकाउंट क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रिड्यूस रिपेयर्स टू एसेट। ठीक है? 12,000। देखो, समझने में कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है? So friend, I have discussed this part, okay, and now this part I am again discussing because there may be some problem on your part. देखो, repairs account debit to bank, this was the entry, initial entry, okay, 9. फाइनली हमको करना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, ओके, ये होना चाहिए था, बट हम लोग क्या किए? हम लोग किए एसेट अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। क्लियर? तो रिपेयर और रिपेयर ये घट गया, ओके, ये होना चाहिए था। तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या हुआ? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट घट गया, एसेट बढ़ गया। तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा? एसेट अकाउंट, एसेट शुड बी क्रेडिटेड, एसेट अकाउंट क्रेडिट टू एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी डेबिटेड। क्लियर? आर यू गेटिंग मी? सो देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बड़े हैं, इसको बढ़ाओ और एसेट को घटाओ। क्लियर? नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रॉफिट, इसका मतलब है क्या? हमारा प्रॉफिट घट गया कितना? 12,000 से, राइट? अच्छा, सॉरी। एंड व्हेन द क्वेश्चन ऑफ एसेट इज ओवर हियर, आप लोग देखो, हम लोग क्या किए थे? Asset 10,000, 10,000 oh 12, sorry, 10,000. The asset was 10,000. This has been reduced. तो साल में हम लोग जब डिप्रिशिएशन किए हैं तो हम लोग क्या किए थे? एसेट अकाउंट से एसेट अकाउंट was XX and we have reduced this, so this is the amount of asset. Clear? And the depreciation has been sorry, X was the asset and 10,000 has been added. Clear? कैसे ऐड हुआ? Depreciation account debit to bank and asset account debit to repairs account debit to bank, then asset account debit to repairs. Okay? तो asset has been enhanced. तो as a result हम लोग 20% इंटरेस्ट इसके ऊपर भी ले लिए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को ये 10,000 जो बढ़े हुए हैं इसके ऊपर, ये 10,000 के ऊपर तो डिप्रिसिएशन हम लोग ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। ओके, ये जो 10,000 के ऊपर हम लोग जो डिप्रिसिएशन चार्ज किए, कितना? एट द रेट ऑफ 20%। इसका मतलब है 20% डिप्रिसिएशन, दैट इज 2,000 डिप्रिसिएशन। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस योर प्रॉफिट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय ₹2,000। ओके, and now what you have to do? You have to add back, you have to add excess depreciation charged. Clear? How much?
10,000 20%. अच्छा, here something is to be said. देखो और क्या है प्रॉब्लम है, so excess depreciation has been charged to added to profit and loss. So ये प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व हो गया. One thing over here was what I want to say. देखो depreciation 20% लिखा हुआ है, but we do not know when the repairs were made. The cost of date of repair we do not know, and the regarding and that is addition to asset of rupees 20, reduction of asset in 10,000, the depreciation has been charged as 20%. The no per annum is written. Since per annum is not written, we have charged straight depreciation. Okay, so it should be added. Clear? तो देखो LIP के लिए तुम्हारा प्रॉफिट क्या हुआ था, घटा था. LIP के लिए प्रॉफिट घटा था, उसको प्रॉफिट बढ़ गया है. रिपेयर्स टू प्लान के लिए तुम्हारा एसेट बढ़ा था, लेकिन प्रॉफिट घट गया था, तो प्रॉफिट को साथ हम ऐड कर दिए. और नेक्स्ट वन डिप्रिशिएशन के चलते जो डिप्रिशिएशन एसेट क्यों हुआ है, उसके लिए प्रॉफिट घट गया है, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी एडेड बैक. ओके, नाउ सी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर बी फॉर पर्सनल ट्रिप टू UK ऑन एथो हैज बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखिए ये जब आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक हम लोग कब करते हैं, when this is the expenditure. Okay, so when the expenditures are met, we pass the journal entry. जब हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं इनिशियल our primary entry, I have already told you, this is journal entry we have passed, and at the flag end of the year what do? Profit and loss account debit to traveling expenses. We should do it. Okay, and that is the basic practice, and that it should be. But this when the traveling expenses is not the expenses of the organization. जब ये organization expense नहीं है, तो अब ये तो organization should not, the profit of organization should not be reduced. It should be where? It should be charged to the drawings of Mr. B account debit to traveling expenses. ये होना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल एक्सपेंसेस, सॉरी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये हम लोग कर चुके हैं. तो ये तो घट गया हमारा. क्लियर? देखो तो प्रॉफिट हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हमारा घट गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट एंट्री शुड बी पास. देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट डेबिट. इसका मतलब है, प्लेन मतलब है दोस्त एक ही, any expenditure whenever it is met, expenses account debit to bank, clear, or cash. But when it is the expense of the business house, we should make the journal entry profit and loss account debit to expense, and as a result the account is neutralized. But when the expenses is not of the firm but of the partners, then what will you do? It should be the drawing, it is obvious that पैसा तो जो पार्टनर को खुद के अपने पैसा से देना चाहिए था, वो फॉर्म से उठा के दे दिए हैं. इसके मतलब है ही हैज़ मेड द ड्राइंग. सो पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो हाउ मच इट इज़ फ्रेंड, इट इज़ अमाउंट आई हैव नॉट रिटन. नो, तो कितना है इधर, ओ 3,000 रुपीज़ 3,000. So as a result, this rupees 3,000 should be added back to profit. Okay. So add traveling expenses of Mr. B. Okay. So LIP, personal expenses of Mr. A. As a result of LIP, the business profit has been reduced, बढ़ा दिए हैं. Journal entry, profit and loss account credit,
and Mr. A's drawing account debit. Clear? It is gone. Repairs to plant, it should be repairs to plant account debit to bank, and it should be charged to profit and loss account debit to repairs to plant. बट हम लोग क्या किए, एसेट को डेबिट कर दिए, एसेट को बढ़ा दिए, रिपेयर्स टू प्लांट को न्यूट्रलाइज कर दिए. बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एनहांस द वैल्यू ऑफ द एसेट, सो एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. ओके, सो द प्रॉफिट हैज बीन एनहांस्ड बाय रुपीज 10,000 एज ए रिजल्ट ऑफ दैट. नाउ एक्सेस ड्राइंग एज ए रिजल्ट ऑफ as a result of this rupees 10,000, it has been added to asset account. एसेट को साथ ऐड हो गया, इसका मतलब है कि हम लोग डिप्रिसिएशन को भी बढ़ा दिए हैं, डिप्रिसिएशन को बढ़ा दिए हैं कितना 10,000, 20% ऑफ 10,000. तो उसको हमको डिप्रिसिएशन के चलते प्रॉफिट एंड लॉस घट गया है. तो व्हाट वी हैव टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, सॉरी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो एज ए रिजल्ट excess depreciation that was charged earlier now added back. Then traveling expenses of one partner of Mr. B is a personal nature, and it has been charged to profit and loss account. Profit हमारा घट गया है and profit को हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो profit and loss account credit and partner drawing of Mr. B account credit. Okay. अच्छा, तो एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस देखो फ्रेंड्स, व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट, एड 6,000 added and 10,000 deducted, so it is the net profit is 56,000. Clear? And I think this is the net profit, adjusted net profit. Adjusted net profit. Clear? So friend, this is the adjusted net profit. Initially, what was the amount of net profit? We had the net profit of rupees 60,000, but after making all the adjustments, the net profit in our hand is 56,000, and that 56,000 should be distributed among the partner. Clear? Acha. Now you see, this net profit is meant for your appropriation. Now there are something. Now then comes the question of what would be the amount in the profit and loss appropriation account. I am making a very short, since we do not have much more space, I am making a very short account, a single column type account of profit and loss appropriation account, PL appropriation. So friend, in PL appropriation, by net profit, how much? It is 56,000. Okay, after adjustment, you can do one thing. Okay, you can make a adjusted profit and loss account. This is not basically given. I am letting you know to do one thing. देखो प्रॉफिट एंड लॉस का आपको बैलेंस कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हिच आई हैव मेड ए स्टेटमेंट. You can make an account also by net profit. Okay, how much it is? 60,000. Clear? Now the profit has been added and enhanced for LIP of Mr. A. How much? It is 1,000. Clear? 1,000. अच्छा, excess depreciation rupees 2,000, and traveling expenses of B, so it is how much? It is 3,000. Clear? And now profit has been reduced as a result of repairs to asset kitna, how much? 10,000. So we are getting it. So we will transfer it to profit and loss appropriation account. What is the amount? You see, it is 66,000, it is 10,000, so it should be 56,000. Okay. Clear? So it has been, in most of the cases, students basically prepare a supporting note in that way. Okay.
So this is the statement method of finding out adjusted profit. Or here I have made an adjusted profit and loss account. Okay. For if I would have been a student and I have been asked to prepare this one, I first prepare this statement. Okay. The statement showing the adjusted profit in that way. After that, what I will do, I will make another note, working note, adjusted profit and loss account in that way. Okay. Then this balance should be transferred to profit and loss appropriation account. Clear? So it is my suggestion, friends, if you can provide time for you, so as you go on doing all this type of analytical answer, the answer in much more analyzed from your impression to the examiner will be enhanced, okay, and you will get due respect to that. Okay. Acha. Now the profit and loss appropriation balance we have got. Now there, what are the issues deducted? IOC, interest on capital. Interest on capital at what percent? Interest on capital at the rate of 5%. At the rate of 5%. Friend, A, B और C कितना होगा आप लोग देख लीजिए. ये 5% इसको कितना हो सकता है? 3750 आई थिंक. और 5% इसका 2000 और इसका 30,000 का कितना होगा? 5% 1,500. Clear? So friend, the solution is with me. Okay, it is 7250. Oh, the total amount is 7250. Friends, the problem is that I should have another column. The column is not here, and that is why you are getting the problem. Anyway, I am giving you the material. Ultimate solution will be given in the problem. Now, question of interest on drawing. Where it will come? Interest on drawing will come over here. IOD. IOD at the rate of 4% per annum. Mind it. 4% per annum. So friends, this part has already been done. I am rubbing this part. Okay. I am rubbing this part. Now see, interest on drawing. Interest on drawing that has already been charged 500, 190 and 350. Okay. For whom? IOD. IOD. A, B and C. IOD for 2014. It has already been calculated by them. How much it is? It is 500. It is 190. Sorry, and it is 350. Clear? Interest on drawing. It has been given in the problem. Okay, 350. Now you see what is happening. This is the original amount, no problem, but there are further drawings, right? Further drawings of a 1000. कब किए हैं? 1, 10, 14. ताले additional drawing कितने होगा? Add additions. Add additions. एक का मतलब कितना? 1000 रुपया ये लोग क्या किए हैं? ये लोग पेमेंट किए हैं मिस्टर ए के लिए पर्सनल ड्राइंग इन LIC इंश्योरेंस प्रीमियम. कब दिए हैं? 1, 10, 14. IOD कितना है? 4% per annum. When the concept of per annum is given, you have to take into consideration the time value. जब per annum दिया रहते हैं, मैं आप लोगों को बार बार बोले हैं, जब per annum दिया होता है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? We should consider the time factor. But here you see that no per annum given, we have charged straight 20%. But since per annum is given, कितना महीना के लिए? देखो 1/4, no? 1/4 means that is October, November, December. So 3 months. 4% for 3 months. कट गया. So it is how much? Huh? It is 10 rupees 10. No? How much? कैलकुलेशन करो. ये ₹10 है. अच्छा, बी का क्या हुआ? देखो, बी का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर द परचेज, फॉर पर्सनल ट्रिप
क्या है 3000 कब दिए हैं वो 3 6 14 ओके ताले बी का एडिशन कब होगा बी का एडिशन होगा ये ए का है और बी का एडिशन होगा देखो 3000 4% कितना महीना बाबू 6 महीना 612 ओके ओके दो so it is how much it is 60 so in case of B it is 60 so it is 60 so as a result what will be the total interest interest in case of A is 510 in case of B it is 250 and in case of C it is 350 okay. So by interest on drawing, what we write A, B and C. How much it is? 550, 550, 250, 510, sorry, 510, 250 and 350. So it is 611, 1110. Okay. So friends, that is the clear-cut analysis of the problem given in CA Introductory Examination on the topic appropriation of profit based on adjustment of profits. So the problem has been given. You have calculated the profit 60,000, but there are some घपला. कौन किए हैं? मेरा मापिक अकाउंटेंट किए हैं. क्या क्या घपला हुआ है बाबू? सर पहला घपला हुआ जो ना अब देखिए ना वैसे अरे ये का ये प्रीमियम था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो माल यहाँ से उठा लिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से तो गया ऑर्गेनाइजेशन के 1000 रुपया गया ठीक है. हम लोग क्या किए दी अकाउंटेंट मैं जैसा अकाउंटेंट है ना वो अकाउंटेंट क्या किए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके LIP को उधर राइट ऑफ कर दिए. लेकिन ये किसका एक्सपेंसेस है ये तो मिस्टर ए का है. सो इट इज the account should be written off against A's drawing account. So drawing account of A to insurance premium. तो ये अभी हमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या किए हैं देखो इसको LIP of A for LIP of A 1000 has been added back to profit. हम लोग क्या किए हैं we have made two type of notes. One is statement type of note and the other one is account adjusted profit and loss account note. तो इधर हम लोग उधर बढ़ाए हैं और हम जब स्टेटमेंट बनाए थे तब प्रॉफिट 60,000 के साथ एक पैसा तो ऐड कर दिए हैं. चलो घपला नंबर 1 देखिए जो दोस्त घपला नंबर 2 रिपेयर्स टू प्लांट. इसीलिए मैं बोलते हैं ना सही ढंग से ठीक ठाक एग्जैक्ट अकाउंटेंट रखो. मेरे को रखिए ना. अच्छा रिपेयर्स टू प्लांट हैज़ बीन चार्ज टू प्लांट अकाउंट. अरे भाई रिपेयर्स तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. This revenue expenditure should be charged against the revenue account, master revenue account. What is the master revenue? Profit and loss account. तो जब आपको expenses होता है हम लोग क्या करते हैं repairs account debit to bank and repairs should be written off against profit and loss account debit to repair. लेकिन एक accountant जो बना दिया है ना asset account को देखा के asset account debit to repair. इसीलिए क्या हुआ profit भी घट गया और एसेट भी बढ़ गया. हमको एसेट को घटाना है एसेट अकाउंट क्रेडिट प्रॉफिट को एसेट अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट को क्रेडिट करना पड़ेगा. तो एज ए रिजल्ट द प्रॉफिट शुड बी सॉरी गलत बोले प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा एसेट को बढ़ाना पड़ेगा. तो इट इज़ दैट 10,000 हैज़ बीन एडेड टू प्रॉफिट एंड एसेट को वैल्यू 10% ऐड हो जाएगा. अभी नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम है. अच्छा ये जो प्लांट का जो रिपेयर्स है 10,000 प्लांट का वैल्यू तो बड़े हैं तो फाइन हम बढ़ा दिए अभी करेक्शन कर लिए. चलो तो 20% इसको डिप्रिसिएशन चार्ज किया है वो तो एडिशनल डिप्रिसिएशन हो गया. एज ए रिजल्ट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन द प्रॉफिट हैज बीन रिड्यूस्ड. द डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज एट व्हाट परसेंट एट 20%. ओके द 20% ऑफ 10,000 इज 2,000. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस 2,000 प्रॉफिट हैज बीन रिड्यूस्ड. हमको क्या करना पड़ेगा वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री प्रॉफिट ऑन क्रेडिट एंड प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट क्रेडिट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. क्लियर. तो हम लोग क्या किए प्रॉफिट को बढ़ा दिए. ठीक है. सो these are the issues for which profit has been enhanced and these are the issues for which profit has been reduced. We have added back and this is the topic for which profit has been enhanced. It should be reduced. Clear. So as a result of this we have got the adjusted profit of 56,000. Now then comes the case of profit and loss appropriation.
ओके, आवर बेसिक सॉल्यूशन इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके लिए हम लोग को दो वर्किंग नोट बनाए। क्या क्या नोट बाबू? पहले वाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट वन एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये नंबर 1। नंबर 2 एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड, माइंड इट, अच्छे तरह से दिल में माइंड में रखो। CA, whenever you are going to give CA examination, if you want to be a qualified chartered accountant, then the authority will test you in detail. कितना minutely you can answer। आप ये दूसरे एग्जाम देते तो ISC और CBSE और हायर ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन एग्जाम, आई वुड हैव टोल्ड यू इतना करने की जरूरत नहीं है। बट जब व्हेनेवर यू आर ए CS स्टूडेंट, यू हैव टू मेक एवरीथिंग क्लियर minutely and minutely. Okay, so these are the adjustment profit and loss we have got. Now this profit will be distributed, will be apportioned under the head and will be distributed among the partner, for that we will prepare profit and loss appropriation account. Okay, fine, it has been, the balance is 56,000 adjusted net profit. You should write it adjusted net profit. Now वेरी ऑफन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा पहला क्या जो अप्रोप्रिएशन जो है, देयर इज सिंगल आइटम एंड दैट इज व्हाट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, नो प्रॉब्लम, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट। 75,000 का 5%, इसका 5%, इसको 5% हम दिखा दिया है, टोटल इतना क्लियर। नाउ द घपला इज अनदर घपला इज देयर। व्हाट इज दैट? ड्राइंग। ड्राइंग हम ये क्या किए, देखो ड्राइंग तो एक किए हैं 15 और 10,000 एक किया है। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी ऐसा ऐसा चार्ज किया गया है। ओके, लेकिन एडिशनल जो ड्राइंग हुआ है ऑन द ग्राउंड ऑफ LIP, ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारा ड्राइंग का इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। और मिस्टर B का पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का जो ड्राइंग थी 1000, ये जो ड्राइंग है तो ड्राइंग का वैल्यू बढ़ेगा। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, वो बढ़ेगा। वो हम आप लोगों को करके दिखा दिए। दैट इज द ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज कैलकुलेटेड अबव, as calculated above. Now it was as calculated earlier, so it is 500, 190 and 350. Now इसको बढ़े 10 रुपया बढ़ा है, इसको 60 रुपया और इसको कोई, तो ये 510, we have written 510. In case of B it is 250 and in case of C it is 350. Okay, it is this is another statement, adjusted IOD, adjusted interest on drawing. This is another working note. So friends, how many working notes we have prepared for getting the problem solved? One, adjusted net profit statement, another adjustment profit and loss accounts, and number 3 this one. When this material हमारा पास है, चलो भाई बिरयानी बना ले, ठीक है, हैं बिरयानी, तो हम लोग बिरयानी का फर्स्ट आइटम बना लिए, one type of biryani, and the other two are capital accounts and drawing account. No problem. Current account and capital account. You know better how to prepare for capital account, how to prepare current account, and all these things. The drawing capital account will be having the same thing, same simple balance. Okay, so there will be no change in capital, but there will be. This is the balance of balance of current account, 10,000 opening balance, by balance BF. Okay. A and B, and in case of C it is 2 balance BF. It is because he has got a negative balance, and to that current account we should add 2 drawings बोल के हम सब ऐड कर देंगे, 2 interest on drawings बोल के 2 drawings कितना है 1,500 15,000 debit side, 10,000 debit side, 10,000 debit side. Interest on drawing 5 in case of A 510, B 250 and 350. It will be all will be in the debit side, and in the credit side of the current account, what it will be in the credit side, it will be current account balance, this that, and after that the profit. This for A it is 24,930, for B 12,655, for C 12,655. It will be credited to it will be shown in the credit side of the current account. The difference of these two, you will get the balance of current account. And this method of maintaining what account? Capital account and current account both. This is the method of fixed capital method of maintaining capital account. What I have already told you, the capital accounts of a partnership firm are maintained in 2 ways. There may be a single account that is capital account, and this capital account includes everything. What? Capital, drawing,
interest on drawing, interest on loan, everything all are everything are given birth over there. This is fixed fluctuating capital method. Why fluctuating? Because the opening balance of capital account and the current account, capital account and the closing balance of current account varies. Opening balance of capital account and the closing balance of capital account both vary. But whenever you are maintaining fixed method of capital, this capital will be as usual. In capital account, buy balance BF 75,000 and either at the date of closing, to balance CD 75,000. In case of this, buy balance BF 40,000, to balance CD 40,000. Buy balance BF 30,000, to balance CD here in case of A and B. So this part remain fixed, and the for variable part, for adjustments part, for drawing, appropriation of profit for and all these things, there will be separate account, and that is partners drawing account, a current account, and this current account will consider all the changes. Clear? So current account, the opening balance of current account and the closing balance of current account will not be the same, okay, but the capital account will remain the same. Clear? Okay, and this is known as fixed capital method. So ultimately what we have got, friend, I think for this phase I am going to complete my this phase of partnership appropriation account, partners current account, partners capital account. Okay, for the time being I will upload no video on this topic. My next topic will be dissolution of partnership firm. Okay, and this dissolution of partnership firm will partnership firm and dissolution of partnership. There is some difference of the concept. People say dissolution of partnership firm. No, friend, dissolution of partnership is something, dissolution of partnership firm is some other thing. In our next video I will consider these issues. Okay, so friend, this is the total solution will be given. Working note has been done over here, so go through. Any problem, WhatsApp number है ना, भेज देना, ठीक है, thank you, अच्छा रहना.